have sworn before you and Almighty God the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and 3/4 ago. The world is very different now, for man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life. And yet the same revolutionary beliefs for which our forebears fought are still at issue around the globe. The belief that the rights of man come not from the generosity of the state, but from the hand of God. We dare not forget today that we are the heirs of that first revolution. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. This much we pledge and more. To those old allies whose cultural and spiritual origins we share, we pledge the loyalty of faithful friends. United, there is little we cannot do in a host of cooperative ventures. Divided, there is little we can do, for we dare not meet a powerful challenge at odds and split asunder. To those new states whom we welcome to the ranks of the free, we pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away, merely to be replaced by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them supporting our view, but we shall always hope to find them strongly supporting their own freedom, and to remember that in the past, those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside. To those people in the huts and villages of half the globe struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help them help themselves for whatever period is required, not because the communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. To our sister republics south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them
to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. To that World Assembly of Sovereign States, the United Nations, our last best hope, in an age where the instruments of war have far outpaced the instruments of peace, we renew our pledge of support to prevent it from becoming merely a forum for invective, to strengthen its shield of the new and the weak, and to enlarge the area in which its writ may run. Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction, we dare not tempt them with weakness, for only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt that they will never be employed. But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course, both sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. So let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite us, instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control of arms, and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute control of all nations. Let both sides seek to invoke the wonders of science instead of its terrors. Together, let us explore the stars, conquer the deserts, eradicate disease, tap the ocean depths, and encourage the arts and commerce. Let both sides unite to heed in all corners of the earth the command of Isaiah to undo the heavy burden and let the oppressed go free. And if a beachhead of cooperation may push back the jungle of suspicion, let both sides join in creating a new endeavor, not a new balance of power, but a new world of law, where the strong are just and the weak secure and the peace preserved. All this will not be finished in the first 100 days, nor will it be finished in the first 1,000 days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin. In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or failure of our course. Since this country was founded, each generation of Americans has been summoned to give testimony to its national loyalty. The graves of young Americans
who answered the call to service surround the globe. Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though in battle we are, but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common enemies of man, tyranny, poverty, disease, and war itself. Can we forge against these enemies a grand and global alliance, north and south, east and west, that can assure a more fruitful life for all mankind? Will you join in that historic effort? In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us here the same high standards of strength and sacrifice which we ask of you. With a good conscience, our only sure reward, with history the final judge of our deeds, let us go forth to lead the land we love, asking His blessing and His help, but knowing that here on earth, God's work must truly be our own. लोग ये हमारे पितर है जो जारजी महाराज है, ये नीम है। देखो भगवान अपने आप ही सेटलमेंट करते हैं। देखो सॉरी, ये देखो कुआं। भाई मेरी हार्ट बीट की तेज हो जाती है जिससे इसके पास आता हूँ ना। वो भाई नहीं जाऊंगा, पास तो नहीं जाऊंगा, दूर से ही। चलो आप भी दूर से देख लो, मेरे कभी गया ही नहीं यार। फटती है भाई, कुआं है, चीज ही ऐसी है तुम्हारी फटे भाई। जिसमें कई कहानियां और सुना देते हैं ना वो घर वाले, या तो झूठी सुनाते हैं या बोर हो रहे हैं तब सुना देते हैं। इसलिए सेफ्टी वाला जी, सेफ्टी फर्स्ट। और ये देखो, यानी कई की तो कॉम्बिनेशन ही ऐसे बैठा रखे हैं भगवान ने। क्या है यार, मैं कुछ दिमाग में तो बोलूँगा तो अंगुली उठ जाएगी यार। यहाँ पे ठीक है सोचो ना, बिना पानी के भी ठीक है। पानी मिल जाएगा ना इनको, मज़ा आ जाएगा भाई, मज़ा, भयंकर मज़ा आ जाएगा। अब देखो ये जाट और ये, और ऐसे नहीं पता ये जाट है या फिर पीपल है। अब तुम बताओ। अभी नीचे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो मेरे को जाट लग रही है, यहाँ पे पीपल लग रहा है, पीपल। और ये जो एरिया है ना,
ये वाला, ये पूरा पीपल का एरिया लगता है, ये जाट का था ना, ये भी जाट का, ये क्या कॉम्बिनेशन, आई डोंट नो। जो भी कॉम्बिनेशन भगवान ऐसे बनाता है भाई, कुछ ना कुछ करता है भगवान। ये अब पति पत्नी होंगे पिछले जन्म में, इन्होंने बोला हमें साथ ही रहना है, तो भगवान ने बोला तुम्हारे कर्म तो अच्छे नहीं है, तो मैं पेड़ ही बना देता हूँ। एक के कर्म अच्छे होंगे, एक के बुरे होंगे। भाई साहब जहां भी जा रहा हूँ ना, बस वही वो मिल रहा है, धोखा ही धोखा। अब देखो ये यार क्या है यार, इस सिस्टम में समझ नहीं आता है। अब इधर तो इस बार कुछ खेत बाया नहीं है, तो शादी होगी ना, तो यहाँ से लेके वहाँ तक टेंट लगेंगे, और उधर घर है एक, उसका काम चल रहा है। तो उन्होंने बोला था कि थोड़ी बहुत वो हम शादी के लिए वो आपके में टेंट वेंट लगाएंगे, अब होने वाली है 10-15 दिन में, वो कट्टा वट्टा देंगे। तो इसलिए हमने टोक के, अब यार कोई बोलता है ना तो भाई ठीक है। बहुत बहुत दूर में बार रखी है ना, दिक्कत तो है नहीं, वैसे ठीक है काम। और एक उस साइड में थोड़ा सा वो भी है, रहने वो रहने के लिए, रात को रुकने के लिए, स्टे करने के लिए है। और यहाँ पे ये थी, अब इसमें पहले वो रहते होंगे दादू वादू, तो हम तो जाते नहीं है भाई उसके पास ही। तो लगता है यार कहानी इतनी सुन ली भाई, तुम कहानी सुन लो, तुम्हें डर नहीं लगे क्या? अब रात को जैसे कॉन्जरिंग मूवी देख ली, सो गए, उसके बाद में भाई साहब हालत टाइट हो जाती है, भयंकर वाली। भाई लोग कहते हैं ना भाई भयंकर, मैं तो एक दिन खुद कॉन्जरिंग देख ली भाई, मुझे अकेले में डर लगा। मैं भाई सुसु करने के लिए भाई को फ़ोन किया, भाई कमरे में से उठ के आओ, वो खुद नहीं सो रहा है। अब उसने बोला मेरे दोस्त है और मैं मेरा भाई, बाद में मैं तो सुसु करके आया, मेरे दोस्त में वहीं पे सो रहा था घर पे। मैंने बोल दिया था, रोक लिया था उसको, आजा पिक्चर देखेंगे। उसकी तल मिली थी, मैंने तो कॉमेडी मूवी का बोला था उसने, लेकिन वो कॉन्जरिंग मूवी आती है ना हॉरर, भाई साहब भयंकर मूवी है भाई वो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कॉन्जरिंग मूवी का, देखो नहीं ऐसे हॉरर मूवी यार, मेरे को हॉरर लगा क्योंकि मैंने पहली बार देखी थी। सही में मैंने पहले कभी देखी नहीं, पहले लोग बोलते ना मैं ना देखूं, मैं तो कॉमेडी देख के काम चलाऊंगा। क्या किलोतर ही ना ये इनकी भी चिल्ला भाई, कुछ भी लेके भाग जाते हैं। और यार ईयरबड्स तो भूल गए, चलो उस साइड में चलते हैं। ओके बेबी लेट्स डू इट। या तो उधर में लेंगे या फिर उस साइड में वो कमरा सा दिख रहा है ना, उधर कमरा दिख रहा है आपको, कमरा सा, ये उधर हमने एक कमरा बना रखा है, जैसे फार्म टाइप का होता है ना, उस टाइप से बना रखा है। यहाँ पे गार्डन वार्डन ये कर रखे हैं। या तो उधर जाएंगे, मैं उधर गया था और इधर आया था, और बाम उधर चले गया ना भाई, पैदल कर नहीं जाऊँगा पक्का, बाइक लेके जाऊँगा, आदमी उधर से उठाऊँगा बाइक और घर ले जाऊँगा। बुलेट तो होगी नहीं मेरे हिसाब से, हाँ बुलेट तो नहीं है, आरटीआर ले जाऊँगा। क्योंकि बुलेट तो यार तुम्हें पता है कॉलेज जाता है भाई, तो वो गेड़ी मार देता है कॉलेज में क्यों लेके जाता है, किस लिए? अरे यार फ़ोन आ रहा है ना मेरे पास, एक बार रुकना। ओहो मिल गए भाई एयरबड्स, मिल गए एयरबड्स। वो है ना वहाँ पे फार्म पे भाई था एक छोटा, तो वो उधर से ही लेके चला गया, उधर से रास्ता जाता है ट्रेन के पास से, सड़क रास्ता, तो उधर से घर की ओर लेके चला गया और आरटीआर भी लेके चला गया। खुश और दुखी दोनों घटना हो चुकी है मेरे साथ। तो मैं क्या वापस अपने रास्ते की ओर चलो, और वहाँ में घर की ओर चलो, जाना तो पड़ेगा घर नहीं जाऊँगा तो खाना कैसे खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा तो काम कैसे करूँगा, काम नहीं करूँगा तो खेत में नहीं आया जाएगा। ओहो बताऊँ मैं इधर से क्यों आता हूँ, इधर शॉर्ट पड़ता है, और उधर से है ना, उधर से उस टाइम तो अंडरपास कैसे घूमो, बाद में ऐसे जाओ, वो वापस अंडरपास से घूम के आओ, तो इसलिए दिक्कत है। और इधर मैं दिक्कत पालता नहीं हूँ,
कि दिक्कत इसलिए है क्योंकि ये सरकार बोलती है अगर ये ट्रेन आती है ना तो आप कटवट मर मुर सकते हो, इसलिए। ओके बाय बाय, मैं चलता हूँ यार, और आपको घर के बाद जाके दिखाऊंगा। ओके ओके बाय।